ओके जी, अब हम अपनी कार रेसिंग गेम में सिचुएशन कुछ यूं है कि सिनेरियो काफ़ी एम्प्टी लग रहा है. सो इफ आई रन द गेम, वेल द कार इज गोइंग बट वी नीड सम अदर स्टफ, दे आर कॉल्ड प्रॉप्स. तो मैं क्या करने लगा हूँ कि आई वांट टू पुट सम बिल्डिंग्स, कुछ इमारतें इर्द गिर्द लगाने की कोशिश करते हैं. और उसके लिए हम क्या करेंगे, आई लिटरली गो टू गूगल एंड हेयर आई एम गोइंग टू सर्च फॉर building textures and I will switch over to image search. तो मैं literally image search कर रहा हूँ. और आप देख सकते हैं कि बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के कुछ building textures आ गए. I can open one of them, save image as building 1. इसी तरह I can probably use this, save image as building 2. इस डिफरेंट शेड, ब्लू शेड की ये वाली ले लेते हैं. सेव इमेज एज बिल्डिंग 3. ये 3 इमेजेस मैंने सेव किए. आई कैन गो बैक टू माई यूनिटी एंड ट्राई टू गेट दीज 3 इमेजेस इनटू माई यूनिटी. यू कैन सी दीज इमेजेस आर इन माई सेम फोल्डर जहाँ पे हमारी फुटबॉल का रोड का टेक्सचर था. बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2 एंड बिल्डिंग 3. इन तीनों को आई विल ड्रैग इनटू माई प्रोजेक्ट. और अब आप यूनिटी में देखेंगे कि मेरे पास ये बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं. क्वाइट इंटरेस्टिंगली, कहीं एसेट स्टोर से महंगी बिल्डिंग्स खरीदने की बजाय मैं सिंपल आई विल क्रिएट गेम ऑब्जेक्ट 3D एंड आई विल क्रिएट अ क्यूब. छोटा सा डब्बा आ गया जो कि अभी फिलहाल मेरी गाड़ी से भी छोटा है, बट आई विल इंक्रीज दैट इन साइज एंड हाइट एंड आई विल पुट इट ऑन द साइड ऑफ द रोड समवेयर ओवर हियर. और इस सूरत हाल में मैं इस पे बिल्डिंग 1 का टेक्सचर ड्रॉप करूंगा. इट लुक्स प्रिटी मच लाइक अ बिल्डिंग. अगर आप यहाँ नीचे से देखें, छत पे भी खिड़की है, विच इज़ वियर्ड, बट यहाँ से अगर आप देखें तो ये अच्छी भली एक बिल्डिंग नज़र आ रही है. सिमिलरली आई कैन क्रिएट अनदर क्यूब, resize it to something different maybe, and place it at a different alignment. And put the building 2 material on this, and this is also a decent looking building. Obviously आप जल्दी से इसके पास से गुजर जाना तो इतना तो पता भी नहीं चलेगा. इसी तरह I can make another cube which is going to be larger. Obviously this is going to be less tall, maybe a bit more wide, sticking to the ground. And the building 3 कहाँ गया? Building 3 is here. Oh, it's not imported correctly. What is this? So this is the problem with getting textures from the internet. So what I'm going to do is probably get another texture from the web, maybe this gray structure. Yeah, this looks good. Save image as, we can delete the blue one, building 4. So building 4 has been saved, and this is building 4 and comes to the folder, and I apply it to this building. Okay, I could probably do the last building, which is going to be a cylinder. Yeah, so we do have circular buildings like this, and I can apply one of the more lighter textures on this. अब ये buildings लगाने के बाद आप गेम सीन में देखेंगे कि सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट लग रहा है. वन थिंग आई कैन सी इज़ के हमारी लाइटिंग थोड़ी सी माइल्ड है. आई कैन प्रॉब्ली क्लिक ऑन द लाइट एंड इंक्रीज द इंटेंसिटी टू मेक इट लिटिल मोर sharp and visible, and I can increase the size. And instead of making more buildings, what I'm going to do is I'll just get these cubes and cylinders and duplicate 4 of them, duplicate 4 of them, duplicate 4 of them, and this gives me like 16 buildings. And now I can duplicate the 16, probably like that, and duplicate again something like that. Intentionally आप देखेंगे कि मैंने
आखिर में एक थोड़ा सा गैप छोड़ा है, शुरू की भी कुछ बिल्डिंग्स हम यहाँ से probably I can delete some of the buildings here. अभी थोड़ी देर में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी and आखिर में से भी I can probably get rid of a few buildings. खाली जगह हमें चाहिए थोड़ी सी. अब चला के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है. Do we have the buildings working? And now you can see not only I can move right and left, there are shadows of the buildings which are falling under the road. और ये बड़ा मज़ेदार सीन लग रहा है. Obviously these are less realistic buildings. You know this is a cube. When people are playing the game, they're concentrating on the car instead of concentrating on the building. So I think this is decent. And then the buildings are finished, and then we have a blank area ahead. So this is how you create more props. You can add more things like trees or structures or other vehicles or things placed on the roadside, maybe footpaths and whatnot. But this is one interesting scene that we're developing already. All right, so let's see how we can probably add traffic to the scene in the next video.